तुळजा भवानी देव्यै नमः। अथ ध्यानं श्यामां पूर्णेदुवदनां श्वेताम्बरधरां शिवां महामेघनिदादहतां निर्वाते दीपवस्थितां भुजाष्टकयुक्तावानां चापशूलगदाधरां खड्गशङ्खगदाचक्र वरदा भयधारिणीं श्रीं देव्योवाच देवेश परमेशान् भक्तानुग्रहकारक तुळजा कवचं वक्षे मम प्रीत्या महेश्वर। श्रीश्वर उवाच शृणु देवी महागुह्य मतिगुह्यं तरं महत तुळजा कवचं वक्षे न देयं कस्यचित् कदा। अस्य श्री तुळजा कवचमलावन्तस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्री तुळजा देवता अनुष्टुप्छन्दः श्री तुळजा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीशङ्कर उवाच तुळजा मे शिरः पातु भाले तु परमेश्वरी नेत्रे नारायणी रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी मुखं पातु महामाया कण्ठं भुवनसुन्दरी बाहुद्वयं विश्वमाता हृदयं शिववल्लभा नाभिं कुण्डलिनी पातु जाह्नवी जाह्नवी तथा पादयो पापनाशिश्च पादाग्रं सर्वतीर्थवत इन्द्रायणी पातु पूर्वे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे नारसिंही च नैऋत्यां खड्गधारिणी पश्चिमे वारुणी पातु वायव्यां वायुरूपिणी उदीच्यां पाशहस्ता च ईशानेश्वरी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ददस्यात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशे रक्षेत् सर्वाङ्गे भुवनेश्वरी इदं तु कथितं दिव्यं कवचं सर्वदेहिकं भूतग्रहहरं नित्यं ग्रहपीडा तथैव च सर्वपापहरे देवी अन्ते सायुज्यमाप्नुयात् यत्र तत्र न वक्तव्यं यदिच्छेदात्मनो हितं शठाय भक्तिहीनाय विष्णुद्वेषाय वै तथा शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत दद्यात् कवचमक्त्युं तत्पुण्यं शृणु पार्वती अश्वमेधसहस्राणि कन्याकोटिशचानि च गवां लक्षसहस्राणि तत्पुण्यं लभते नरः अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वलोकसनातनं वनेरणे महाघोरे भयवादे महाहवे जपेत् कवचमादेवी सर्वविघ्नविनाशिनी भौमवारे महापुण्ये पठेत् कवचमाहितः सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां किमत्र बाहुनोक्तेन देवी सायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीस्कन्धपुराणे सहस्रार्द्रिखण्डे तुळजा महात्म्ये ईश्वरपार्वती संवादे श्री तुळजा कवचं सम्पूर्णम्। तुळजा भवानी देव्यै नमः। अथ ध्यानं श्यामां पूर्णेदुवदनां श्वेताम्बरधरां शिवां महामेघनिदादहतां निर्वाते दीपवस्थितां भुजाष्टकयुक्तावानां चापशूलगदाधरां खड्गशङ्खगदाचक्र वरदा भयधारिणीं श्रीं देव्योवाच देवेश परमेशान् भक्तानुग्रहकारक तुळजा कवचं वक्षे
मम प्रीत्या महेश्वर। श्रीश्वर उवाच शृणु देवी महागुह्य मतिगुह्यं तरं महत। तुळजा कवचं वक्षे न देयं कस्यचित् कदा। अस्य श्रीतुळजा कवचमलावन्तस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीतुळजा देवता अनुष्टुप्छन्दः श्रीतुळजाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीशङ्कर उवाच तुळजा मे शिरः पातु भाले तु परमेश्वरी। नेत्रे नारायणी रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी। मुखं पातु महामाया कण्ठं भुवनसुन्दरी। बाहुद्वयं विश्वमाता हृदयं शिववल्लभा। नाभिं कुण्डलिनी पातु जाह्नवी जाह्नवी तथा। पादयो पापनाशिश्च पादाग्रं सर्वतीर्थवत्। इन्द्रायणी पातु पूर्वे आग्नेयामग्निदेवता। दक्षिणे नारसिंही च नैऋत्यां खड्गधारिणी। पश्चिमे वारुणे पातु वायव्यां वायुरूपिणी। उदीच्यां पाशहस्ता च ईशानेश्वरी तथा। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ददस्यात् वैष्णवी तथा। एवं दशदिशे रक्षेत् सर्वाङ्गे भुवनेश्वरी। इदं तु कथितं दिव्यं कवचं सर्वदेहिकं। भूतग्रहहरं नित्यं ग्रहपीडा तथैव च। सर्वपापहरे देवी अन्ते सायुज्यमाप्नुयात्। यत्र तत्र न वक्तव्यं यदिच्छेदात्मनो हितं। शठाय भक्तिहीनाय विष्णुद्वेषाय वै तथा। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत। दद्यात् कवचमत्यं तत्पुण्यं शृणु पार्वती। अश्वमेधसहस्राणि कन्याकोटिशचानि च। गवां लक्षसहस्राणि तत्पुण्यं लभते नरः। अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा। सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वलोकसनातनं। वने रणे महाघोरे भयवादे महाहवे। जपेत् कवचमादेवी सर्वविघ्नविनाशिनी। भौमवारे महापुण्ये पठेत् कवचमाहितः। सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां। किमत्र बाहुनोक्तेन देवी सायुज्यमाप्नुयात्। इति श्रीस्कन्धपुराणे सहस्रार्द्रिखण्डे तुळजामाहात्म्ये ईश्वरपार्वती संवादे श्रीतुळजाकवचं सम्पूर्णम्। तुळजा भवानी देव्यै नमः। अथ ध्यानं श्यामां पूर्णेदुवदनां श्वेताम्बरधरां शिवां। महामेघनिदादातां निर्वाते दीपवस्थितां। भुजाष्टकयुक्तावानां चापशूलगदाधरां। खड्गशङ्खगदाचक्र वरदाभयधारिणीं। श्रीं देव्योवाच देवेश परमेशान् भक्तानुग्रहकारक। तुळजा कवचं वक्षे मम प्रीत्या महेश्वर। श्रीश्वर उवाच शृणु देवी महागुह्य मतिगुह्यं तरं महत। तुळजा कवचं वक्षे न देयं कस्यचित् कदा। अस्य श्रीतुळजा कवचमलावन्तस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीतुळजा देवता अनुष्टुप्छन्दः श्रीतुळजाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीशङ्कर उवाच तुळजा मे शिरः पातु भाले तु परमेश्वरी। नेत्रे नारायणी रक्षेत्
कर्णमूले तु शङ्करी मुखं पातु महामाया कण्ठं भुवनसुन्दरी बाहुद्वयं विश्वमाता हृदयं शिववल्लभा नाभिं कुण्डलिनी पातु जाह्नवी जाह्नवी तथा पादयो पापनाशिश्च पादाग्रं सर्वतीर्थवत् इन्द्रायणी पातु पूर्वे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे नारसिंही च नैऋत्यां खड्गधारिणी पश्चिमे वारुणे पातु वायव्यां वायुरूपिणी उदीच्यां पाशहस्ता च ईशानेश्वरी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ददस्यात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशे रक्षेत् सर्वाङ्गे भुवनेश्वरी इदं तु कथितं दिव्यं कवचं सर्वदेहिकं भूतग्रहहरं नित्यं ग्रहपीडा तथैव च सर्वपापहरे देवी अन्ते सायुज्यमाप्नुयात् यत्र तत्र न वक्तव्यं यदिच्छेदात्मनो हितं शठाय भक्तिहीनाय विष्णुद्वेषाय वै तथा शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत दद्यात् कवचमक्त्युं तत्पुण्यं शृणु पार्वती अश्वमेधसहस्राणि कन्याकोटिशचानि च गवां लक्षसहस्राणि तत्पुण्यं लभते नरः अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वलोकसनातनं वनेरणे महाघोरे भयवादे महाहवे जपेत् कवचमादेवी सर्वविघ्नविनाशिनी भौमवारे महापुण्ये पठेत् कवचमाहितः सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां किमत्र बाहुनोक्तेन देवी सायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीस्कन्धपुराणे सहस्रार्द्रिखण्डे तुळजामाहात्म्ये ईश्वरपार्वती संवादे श्रीतुळजाकवचं सम्पूर्णम्। तुळजा भवानी देव्यै नमः। अथ ध्यानम्। श्यामां पूर्णेदुवदनां श्वेताम्बरधरां शिवां महामेघनिदादातां निर्वाते दीपवस्थितां भुजाष्टकयुक्तावानां चापशूलगदाधरां खड्गशङ्खगदाचक्र वरदाभयधारिणीं श्रीं देव्योवाच देवेश परमेशान् भक्तानुग्रहकारक तुळजाकवचं वक्षे मम प्रीत्या महेश्वर। श्रीश्वर उवाच शृणु देवी महागुह्य मतिगुह्यं तरं महत तुळजाकवचं वक्षे न देयं कस्यचित् कदा। अस्य श्रीतुळजाकवचमलावन्तस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीतुळजादेवता अनुष्टुप्छन्दः श्रीतुळजाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीशङ्कर उवाच तुळजामेश्वरः पातु भाले तु परमेश्वरी नेत्रे नारायणी रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी मुखं पातु महामाया कण्ठं भुवनसुन्दरी बाहुद्वयं विश्वमाता हृदयं शिववल्लभा नाभिं कुण्डलिनी पातु जाह्नवी जाह्नवी तथा पादयो पापनाशिश्च पादाग्रं सर्वतीर्थवत् इन्द्रायणी पातु पूर्वे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे नारसिंही च नैऋत्यां खड्गधारिणी पश्चिमे वारुणे पातु वायव्यां वायुरूपिणी
उदीच्यां पाशहस्ता च ईशानेश्वरी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ददस्यात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशे रक्षेत् सर्वाङ्गे भुवनेश्वरी इदं तु कथितं दिव्यं कवचं सर्वदेहिकं भूतग्रहहरं नित्यं ग्रहपीडा तथैव च सर्वपापहरे देवी अन्ते सायुज्यमाप्नुयात् यत्र तत्र न वक्तव्यं यदिच्छेदात्मनो हितं शठाय भक्तिहीनाय विष्णुद्वेषाय वै तथा शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत दद्यात् कवचमक्त्युं तत्पुण्यं शृणु पार्वती अश्वमेधसहस्राणि कन्याकोटिशचानि च गवां लक्षसहस्राणि तत्पुण्यं लभते नरः अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वलोकसनातनं वनेरणे महाघोरे भयवादे महाहवे जपेत् कवचमादेवी सर्वविघ्नविनाशिनी भौमवारे महापुण्ये पठेत् कवचमाहितः सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां किमत्र बाहुनोक्तेन देवी सायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीस्कन्धपुराणे सहस्रार्द्रिखण्डे तुळजामाहात्म्ये ईश्वरपार्वती संवादे श्रीतुळजाकवचं सम्पूर्णम्। तुळजा भवानी देव्यै नमः। अथ ध्यानं श्यामां पूर्णेदुवदनां श्वेताम्बरधरां शिवां महामेघनिदादातां निर्वाते दीपवस्थितां भुजाष्टकयुक्तावानां चापशूलगदाधरां खड्गशङ्खगदाचक्र वरदा भयधारिणीं श्रीं देव्योवाच देवेश परमेशान् भक्तानुग्रहकारक तुळजाकवचं वक्षे मम प्रीत्या महेश्वर श्रीश्वर उवाच शृणु देवी महागुह्य मतिगुह्यं तरं महत तुळजाकवचं वक्षे न देयं कस्यचित् कदा अस्य श्रीतुळजाकवचमलावन्तस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीतुळजादेवता अनुष्टुप्छन्दः श्रीतुळजाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः श्रीशङ्कर उवाच तुळजामेश्वरः पातु भाले तु परमेश्वरी नेत्रे नारायणी रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी मुखं पातु महामाया कण्ठं भुवनसुन्दरी बाहुद्वयं विश्वमाता हृदयं शिववल्लभा नाभिं कुण्डलिनी पातु जाह्नवी जाह्नवी तथा पादयो पापनाशिश्च पादाग्रं सर्वतीर्थवत् इन्द्रायणी पातु पूर्वे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे नारसिंही च नैऋत्यां खड्गधारिणी पश्चिमे वारुणे पातु वायव्यां वायुरूपिणी उदीच्यां पाशहस्ता च ईशानेश्वरी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ददस्यात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशे रक्षेत् सर्वाङ्गे भुवनेश्वरी इदं तु कथितं दिव्यं कवचं सर्वदेहिकं भूतग्रहहरं नित्यं ग्रहपीडा तथैव च सर्वपापहरे देवी अन्ते सायुज्यमाप्नुयात् यत्र तत्र न वक्तव्यं यदिच्छेदात्मनो हितं शठाय भक्तिहीनाय विष्णुद्वेषाय वै तथा
शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत। दद्यात् कवचमक्त्युं तत्पुण्यं शृणु पार्वती। अश्वमेधसहस्राणि कन्याकोटिशचानि च गवां लक्षसहस्राणि तत्पुण्यं लभते नरः। अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वलोकसनातनं। वनेरणे महाघोरे भयवादे महाहवे जपेत् कवचमादेवी सर्वविघ्नविनाशिनी। भौमवारे महापुण्ये पठेत् कवचमाहितः सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां। किमत्र बाहुनोक्तेन देवी सायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीस्कन्धपुराणे सहस्रार्द्रिखण्डे तुळजामाहात्म्ये ईश्वरपार्वती संवादे श्रीतुळजाकवचं सम्पूर्णम्। तुळजा भवानी देव्यै नमः। अथ ध्यानम्। श्यामां पूर्णेदुवदनां श्वेताम्बरधरां शिवां महामेघनिदादातां निर्वाते दीपवस्थितां भुजाष्टकयुक्तावानां चापशूलगदाधरां खड्गशङ्खगदाचक्र वरदा भयधारिणीं। श्रीं देव्योवाच देवेश परमेशान् भक्तानुग्रहकारक तुळजा कवचं वक्षे मम प्रीत्या महेश्वर। श्रीश्वर उवाच शृणु देवी महागुह्य मतिगुह्यं तरं महत। तुळजा कवचं वक्षे न देयं कस्यचित् कदा। अस्य श्रीतुळजा कवचमलावन्तस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीतुळजादेवता अनुष्टुप्छन्दः श्रीतुळजाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीशङ्कर उवाच तुळजा मे शिरः पातु भाले तु परमेश्वरी। नेत्रे नारायणी रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी। मुखं पातु महामाया कण्ठं भुवनसुन्दरी। बाहुद्वयं विश्वमाता हृदयं शिववल्लभा। नाभिं कुण्डलिनी पातु जाह्नवी जाह्नवी तथा। पादयो पापनाशिश्च पादाग्रं सर्वतीर्थवत्। इन्द्रायणी पातु पूर्वे आग्नेयामग्निदेवता। दक्षिणे नारसिंही च नैऋत्यां खड्गधारिणी। पश्चिमे वारुणी पातु वायव्यां वायुरूपिणी। उदीच्यां पाशहस्ता च ईशानेश्वरी तथा। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ददस्यात् वैष्णवी तथा। एवं दशदिशे रक्षेत् सर्वाङ्गे भुवनेश्वरी। इदं तु कथितं दिव्यं कवचं सर्वदेहिकं। भूतग्रहहरं नित्यं ग्रहपीडा तथैव च। सर्वपापहरे देवी अन्ते सायुज्यमाप्नुयात्। यत्र तत्र न वक्तव्यं यदिच्छेदात्मनो हितं। शठाय भक्तिहीनाय विष्णुद्वेषाय वै तथा। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत। दद्यात् कवचमक्त्युं तत्पुण्यं शृणु पार्वती। अश्वमेधसहस्राणि कन्याकोटिशचानि च गवां लक्षसहस्राणि तत्पुण्यं लभते नरः। अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वलोकसनातनं। वनेरणे महाघोरे भयवादे महाहवे जपेत् कवचमादेवी
सर्वविघ्नविनाशिनी भौमवारे महापुण्ये पठेत् कवचमाहितः सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां किमत्र बाहुनोक्तेन देवी सायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीस्कन्धपुराणे सहस्रार्द्रिखण्डे तुळजामाहात्म्ये ईश्वरपार्वती संवादे श्रीतुळजाकवचं सम्पूर्णम्।